uncle. How are you doing? Where is Fontaines? First right. First right. Yeah. और किधर जा सकता है मैं एकदम पुराना वो देखने के लिए? उधर से है वो। अच्छा, ओल्ड पोर्टुगीज हाउस है। सब उधर ही है। हाँ। आप कहाँ से आया? मैं देहरादून से। मैं गोवा का हूँ। आप गोवा के हो? हमारा पैदा इधर हुए? जो नीचे जाने का फर्स्ट राइट था। या फर्स्ट राइट। हाँ। ठीक है, थैंक यू अंकल। क्या नाम है आपका? प्रभाकर। नमस्कार। हाय नमस्कार। आज हम ओल्ड गोवा के फॉन्टेनेस एरिया में हैं, जो पोर्तुगीज़ रूल के दौरान कॉलोनी हुआ करती थी और उनके क्वार्टर्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे बहुत रंग बिरंगे घरों के लिए जाना जाता है और आज हम उन्हीं गलियों में घूम रहे हैं और आपको हम अपनी नज़रों से वो गलियाँ दिखाते हैं। ये पंजी में है फॉन्टेनेस एरिया।
आगे से लेफ्ट या राइट? थैंक यू। अरे आराम से आराम से। सुबह सुबह हम पहुंच गए जोसेबार। कोई भी नहीं था वहाँ पे, जाहिर सी बात है। और लेकिन हमने इसका इंटीरियर देखा, इंटीरियर का मज़ा लिया। ये आज भी जैसे पुराने तौर पे चला करता था वैसे ही है। पुरानी तस्वीरें, पुराने बोर्ड्स और पुराना सिटिंग अरेंजमेंट। तो आप जब भी आएँ तो जोसेबार ज़रूर आना लाजमी है। इस खूबसूरत वॉक के बाद अब पेट पूजा का वक्त है और गोवा आए तो गोवन फिश थाली तो बनती है। ताजी मछली, सुगंधित करी, भात, सोल कड़ी और ऑथेंटिक गोवन फ्लेवर से भरपूर। तो आइए ट्राई करते हैं गोवन फिश थाली। We are at Gold Spot Canteen. Okay, can you tell me more about this? क्या क्या है? So this is your mackerel masala rubber fry. This is kismul. This is made of like dried prawns and coconut. It's a delicacy in Goa. Then we have a prawn curry. It's a classic Goan prawn curry. And then we have beans. These are again a local produce. Okay. And then we have some peas, but it's made in a form that is served in Goa. Slightly a little bit of sweetness is there in it. And then we have our famous bimli chutney. Okay. Bimli is a fruit that's found in Goa. Okay. It's a very sour fruit and we make a chutney out of it with like a little bit of coconut and the other herbs. Yes, and then we have like a salad next to it. What is this? This is a soul curry. Soul curry. Okay. This is a savory version of kokum. Okay. It is to be had after you've had your meal, Okay. so it's a digestive. It's good for digestion. Yes, it is. And then we have sheera, which is basically similar. Yeah, halwa. Yes. Yeah. I hope you enjoy it. Yeah. Thank you very much.
हम घूम रहे हैं फॉन्टेनेस की पुरानी गलियों में। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत है ये जगह है। क्या नाम है? हाय। गोवा की रातें और भी चमकदार बनती हैं यहाँ के शानदार कैसीनो में। रंगीन रोशनी, रोमांचक गेम्स, लाइव एंटरटेनमेंट और ग्लैमरस माहौल। और इस तरह फॉन्टेनेस की रंगीन गलियों का रंगीन सफर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नई कहानियों और नए मंजर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सफ़र का मज़ा लेते रहिए। अलविदा।